Okay, students, good morning. We have to start the quadratic equation and we have to start the practice set 2.6. Question number first. The product of Pragati age 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. Find her present age. Okay, students, so this is a theoretical question. We already learned about we have to convert these statements into an equation, and we have to just after finding the equation we have to solve and find that the answer. Okay, this is basically a application base of the quadratic equation. These are some of the examples are given. Okay, so here the students, let the Pragati age be x years. We have to consider x years because we have to find the present age of Pragati. Present age, okay. So present age we have to consider x years. So what are the conditions? Here age 2 years ago was. So 2 years ago age. So obviously x minus 2 years. The present of the Pragati age 2 years ago and 3 years hence. Okay. So 2 years ago so obviously is minus. So her age 2 years ago was. We have to convert this statement into equation. So 2 years ago means obviously x minus 2 years and her age 3 years from now will. Okay, now will 3 years. So x plus 3 years. Okay. So here the number denoting the age are so x minus 2 and x plus 2. Okay. Next condition is numerically is 84. Her age 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. So students, from the given condition we have to got the equation is x minus 2 in the bracket of x minus 2 and x plus 3 is equal to 84, comparing with, because numerically we have to say that 84. So we got the equation, okay, but we have to solve it. So we have the multiplication of the 1 by 1. So x is multiplied by the this bracket x plus 3, and then minus 2 is multiplied by the same bracket x plus 3 is equal to 84. Okay, so we have to do the multiplication. So x into x square plus 3x minus 2x, and here the sign is plus and minus, so minus 3 2s are 6 and 84 we have to take the in the left side. So you get the negative minus 84 is equal to 0. Okay, again we have to simplify. X square same as and 3x minus 2x. 3x minus 2x we got the x. Okay, we have to do the subtraction and the sign of the bigger number. Okay, and the minus 6 minus 84. So minus minus plus. So you will get the addition is the minus 19 and sign of the bigger number. Okay, is equal to 0. Okay, students. So we got the equation x square plus x minus 19. So obviously is a quadratic equation. Okay, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, higher degree is 2. Okay, so we have to use the factorization method to solve this. So students, we need the two numbers. When the multiplication is 1 into 9 minus 90, so multiplication is a minus 19. Okay, and we got the two numbers when the sum is a 1. Okay, so we got the two numbers. ऐसे हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन minus 90 हो और sum 1. Okay, so we know the number 10 and minus 9. So 10 nines are, so multiplication करते हैं 10 nines are minus 90 and the addition is 2. So 10 plus minus 9 is equal to 1 आएगा. So देखिए 10 plus minus हो जाएगा यहाँ पे and the sign so minus करेंगे, so 10 minus 9 is equal to 1. Okay, वो factor मिल गए. We have to just place in this factor x square plus
10x minus 9x minus 90 is equal to 0. Okay, so first here the students we got the first, second term and third and fourth term. So we have to common the in the first and second term x. So x plus 10 minus 9 in the second term, third and fourth term we have to common the 9 minus 9. So we got the term x plus 10. So here the same term हमें आनी चाहिए यहाँ पे x plus 10 second दोनों bracket में. Okay, so we got the factors are the x into x plus 10 and x minus 9. Okay, x plus 10 and x minus 9 is equal to 0. We have to compare with this 0. So x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. Okay, so x is equal to minus 10. Okay, and x is equal to 9. Okay, तो यहाँ पे देखिए but the h cannot be a negative. h cannot be negative हो नहीं सकती आपकी h. तो x is equal to minus 10 is unacceptable because h is not negative. So x is equal to 9. So x is equal to 9. जो हमें रूट्स मिले हैं, एक नेगेटिव मिला है और एक पॉजिटिव. ऑब्वियसली तो एज आपकी पॉजिटिव आएगी. सो प्रगति एज इज 9 years. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. आप कौन से भी मेथड यूज कर सकते हैं. जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए तो सॉल्व इजीली हो जाता है. So, but just build a equation. देखिए क्वेश्चन नंबर 3. In the orchard of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of the tree in each row is 5 more than that in each column. So find the number of the tree in each row and each column with the help of the following chart. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक्स में उन्होंने चार्ट दिया है. तो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है पर हम यहाँ पे रेगुलरली सॉल्व करेंगे इसको. तो एक्टिविटी में आप वो जो आंसर्स आएंगे तो आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या की. इन ऑर्चर्ड ऑफ द मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. 150 ऑरेंज ट्रीज है. देर आर द नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रॉ इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. यहाँ पे एक कंडीशन दी उन्होंने की नंबर ऑफ द ट्रीज इन द ईच रॉ इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. So find the number of the tree in each row and in each column with the help of the chart. Okay. ओके स्टूडेंट, देखते हैं फिर हमें यहाँ पे कंडीशन दिए है वो हम अप्लाई करते हैं. So let the number of the tree in each column be x. Okay, so we have to just consider the number of the tree in each column be x, and then the number of the tree in each row is x plus 5. उन्होंने कहा कि more than 5. And the tree is 5 more than 5. Okay, so x plus 5. So the students total number of the tree निकालनी होंगी जैसे कि row and columns. तो हमें वो उनकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए. सो वी कंसिडर फॉर द कॉलम इज x एंड द नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रॉ इज x प्लस 5. सो द नंबर ऑफ द ट्रीज आर द x इंटू x प्लस 5. ओके, x इंटू x प्लस 5. सो द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज इन इज द गिवन बी द 150. उन्होंने की ईच रॉ में कितने की, रॉ और कॉलम में कितने 150 है. सो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया है. देखिए x इंटू x plus 5 is equal to 0. Okay, so we have to solve this equation. Multiply one by one this bracket. So x into x square plus 5x minus 50. Minus 50 हम लेफ्ट साइड में लेंगे is equal to 0. Okay students, so we got the quadratic equation. Okay, obviously is comparing with the standard form ax square plus bx plus c. We have to find the एनी टू नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए -150. ओके, एंड द नंबर जो सम है आपको चाहिए 5. ओके, मिडल टर्म इज अ सम होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिलेंगे 15 एंड -10. ओके, 15 माइनस में देखिए मल्टीप्लिकेशन रखते हैं 15 इंटू 10. 15 10s are 150. ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस नंबर है तो माइनस आएगा. एंड सम इज द मिडल टर्म. सम इज द मिडल टर्म यानी कि एडिशन करके देखते हैं इनकी फिर 15 प्लस -10.
इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 आएगा। ओके, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर। ओके, तो फैक्टर मिल गया यहाँ पे। देखिए अब पुटअप करेंगे इसमें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ओके, so in the first and the second term we have to common x कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x कॉमन निकल सकता है। x प्लस 15 आएगा यहाँ पे, x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड x इंटू 15 इज इक्वल 15x, एंड माइनस 10 इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म टू कॉमन 10 निकाल के देखते, तो यहाँ पे देखिए आपको बचेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों टर्म आपकी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें वी गॉट द फैक्टर्स आर x प्लस 15 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, okay, we are to comparing with the 0 both the terms. X plus 15 is equal to 0 and x minus 10 is equal to 0. So we got the answer is x is equal to minus 15. देखिए यहाँ पे राइट साइड में वो निगेटिव हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 10, ये भी राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है। तो बट द नंबर ऑफ द ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ द ट्रीज आपकी यहाँ पे निगेटिव नहीं होगी। जो हमारा रूट आया है x इज इक्वल टू माइनस 15, so is unacceptable, so x is equal to 10. Okay, so x is equal to 10 means so we have to find the x plus 5, so x plus 5 means 10 plus 5 because x की वैल्यू हमें 10 मिली है, so 10 plus 5 is equal to 15. so यहाँ पे हमने x कंसिडर किया था नंबर ऑफ द ट्रीज इन कॉलम के लिए। ओके, नंबर ऑफ द ट्रीज इन कॉलम, सो x तो आपकी कॉलम्स की ट्री कितनी है 10 एंड x plus 5 फॉर द रॉ। So x plus 5 means obviously 10 plus 5 is 15. So number of the rows are the 15. Number of the trees 15 in row. So the number of the trees in each column and each row is 10 and 15 respectively. Okay. तो यहाँ पे हमने इसी तरह से फाइंड किया। आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन आपको प्रॉपर बनाना है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए उन्हें मधुसूदन देर आर 150 ट्री इन ऑरेंज ट्री बताया था, एंड द नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रॉ इज 5 मोर देन ईच कॉलम। कि उन्होंने कंडीशन बताया था कि नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रॉ इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, से रो से 5 यानी ज़्यादा है वो। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉलम के लिए x कंसिडर किया है, और द नंबर ऑफ द ट्रीज रॉज इज इज x प्लस 5, रॉ में क्या है कॉलम से ज़्यादा है 5। इस तरह से हमने वो कंडीशन बनाई। तो हमने वो टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज हमें निकालने थे, तो रोज और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो रोज फॉर द x एंड द कॉलम्स फॉर द रोज फॉर द x प्लस 5 एंड कॉलम्स फॉर द x। ओके, इनकी मल्टीप्लिकेशन और टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज आर 150। ओके, तो कंडीशन बनाइए और सॉल्व कीजिए।